हेलो बच्चों, आज हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो इस बात को पहले हम समझें कि जब हम किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की बात करते हैं, सपोज एसिड हमारे पास Ha है, तो ये आयनाइज होके क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव एंड A माइनस। What we can do in this case is we can write the dissociation constant of this acid as equal to H positive into A minus upon HA। तो ये क्या आएगा, ये किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि कोई कंपाउंड, कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और Ka अगर ज़्यादा होगा तो pKa, जिसको हम क्या लिखते हैं एज माइनस लॉग ऑफ Ka के बराबर होता है। तो अगर pKa ज़्यादा होगा तो Ka की वैल्यू कम होगी। सो आई कैन से वन कंक्लूजन ओवर हियर इज दैट एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की अगर कंपेयर करनी हो तो वो इस बात के प्रोपोर्शनल है कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है। अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और अगर H प्लस आयन ज़्यादा होगा तो Ka ज़्यादा होगा, और Ka ज़्यादा होगा तो pKa की वैल्यू कम होगी। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज दैट यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आप H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के साथ, Ka के साथ और pKa के साथ रिलेट कर सकते हो। इज इट ओके? आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज दिस, हाउ टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे केसेस को अलग अलग हमने क्लासिफाई किया है, जिसमें से पहले कुछ केसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, and that is about the acidic strength of carboxylic acids. RCOOH, this is carboxylic acid, and if I say that which hydrogen is an acidic hydrogen over here, so we know that the hydrogen atom that is bonded to oxygen will be the most acidic hydrogen in this case, because its conjugate base, that is the carboxylate ion, that is stabilized by which factor? It is stabilized by resonance. So resonance is a stabilizing effect over here, and we say that carboxylate ion is stabilized by resonance. That is the reason why this hydrogen which is bonded to oxygen atom is most acidic. If I want to compare the acidic strength of carboxylic acid, हाउ डू वी डू दैट थिंग? हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। सो व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस, यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो वी वांट टू से कि ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, मोर इज द अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, दैट इज द OH बॉन्ड इन दिस केस। और जितना अट्रैक्शन होगा इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैन इजीली बी लॉस्ट। सो वी कैन से दिस थिंग कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दे विल इंक्रीज the acidic strength of the carboxylic acid. Similarly, हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इज इट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी, Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दिस, इसके बाद जब हम अगली बात करते हैं इसमें, तो हमारा ये कहना है कि अगर मैं
नाइट्रो एसिटिक एसिड लेता हूं और सिंपल एसिटिक एसिड लेता हूं, so what we can say over here that which will be more acidic in this case? The compound that will be more acidic over here will be nitroacetic acid. The reason being यहाँ पर NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? It is showing the minus I effect, whereas CH3 group present over here is showing the plus I effect over here. So CH3 by virtue of showing the plus I effect is actually decreasing the acidic strength over here, और NO2 ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. फाइन. टू अफेक्ट दिस थिंग, दिस मच इज वेरी मच क्लियर दैट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ Ka or pKa or the acidic strength of the carboxylic acid, we need to know the group effect. जो भी ग्रुप वहां पर बॉन्डेड है उसके रेफरेंस में हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा इफेक्ट शो करता है. This is trichloroacetic acid we are having. We are having dichloroacetic acid and we are having monochloroacetic acid. So what does this indicate? It indicates that यहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोरो ग्रुप अटैच है यहाँ पर, उस क्लोरो ग्रुप का इन्फ्लुएंस हमें देखना होगा. यहाँ पे तीनों क्लोरो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग द माइनस आई इफेक्ट. यहाँ पे देर आर ओनली 2 क्लोरो ग्रुप विच आर शोइंग द माइनस आई इफेक्ट एंड देर इज 1 क्लोरो ग्रुप ओनली विच इज शोइंग द माइनस आई इफेक्ट. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस इज देयर इन केस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फॉलोड बाय डाइक्लोरो, followed by monochloroacetic acid. Is it clear? The second example which we can discuss over here is that depends on the inductive effect concept. That inductive effect actually decreases with the distance. So if we consider 2-chlorobutanoic acid, 3-chlorobutanoic acid and this acid, what we can say? We can say that comparing these acidic strength, we can say कि क्लोरो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? It shows the minus I effect. But पहले वाला जो क्लोरो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक होगा. Then followed by second, the followed by third. तो अगर ये दोनों तीनों कंपाउंड्स हमने लिखे हैं, इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो 1, 2, that is 3. This is the decreasing order of acidic strength of carboxylic acids we are having. Fine. The next point is that depends on the effect of the group that are present in the carboxylic acids. Suppose I am having NO2 group, I am having the fluoroacetic acid, I am having the chloroacetic acid. So what we are going to say in this case, we will say that in this particular case कि कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. द रीजन बीइंग जो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है वो है NO2 फॉलोड बाय फ्लोरो फॉलोड बाय क्लोरो ग्रुप. So this is the decreasing order of the acidic strength of carboxylic acid. This is the first point that we have discussed about the acidic strength of carboxylic acid. Fine. The second thing about the acidic strength only is in this case that we discuss at a preliminary level of discussion of carboxylic acid will be carboxylic acid के लिए तो हमने देखा ही है. In addition to this, we also discuss the acidic strength of alcohols also and phenols also. Phenols के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि that there is OH group that is present over here, और OH group phenolic group जब H plus ion कौन सा देगा? This H plus ion, it will be released as H plus ion,
it is forming the phenoxide and phenoxide is actually stabilized by which factor? It is again stabilized by resonance. We are indicating the different resonating structures of the phenoxide in this case in this particular way. So what does this indicate? It indicates that फिनॉल में ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस. सिमिलरली अगर मेरे को सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर क्या होता है इन दैट पर्टिकुलर केस. उसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके चेक करें तो इन दैट केस इट विल बी phenol is this, it will be indicating this as the resonating structure. So we have discussed this point, the reason being that यहाँ पर फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको भी हम लोग किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? वी कैन कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ ओनली. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक strength of phenol and electron releasing group decreases the acidic strength of phenol. तो यहाँ पर अलग अलग केसेस आ सकते हैं. हमें पता होना चाहिए हर एक ग्रुप का. इट इज प्रिज्यूम्ड कि बिफोर अटेंडिंग दिस लेक्चर यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हर एक ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है. वेदर इट इज शोइंग द प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इट इज शोइंग द प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट. इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे. अगर मैं फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ, मेटानाइट्रोफिनॉल्स के साथ और पैरानाइट्रोफिनॉल्स के साथ. So what we are going to say in this case, we have to compare the acidic strength of these phenol and nitrophenol. एक बात तय है कि इन चारों कंपाउंड्स में से जो फर्स्ट कंपाउंड होगा that will be least acidic compound over here. Further, in addition to this, what we can say that यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है वो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो करता है. ठीक है, एंड मेटा पोजीशन से इट इज गोइंग टू शो ओनली द माइनस आई इफेक्ट एंड NO2 ग्रुप फ्रॉम द पैरा पोजीशन इज शोइंग द माइनस आई एज वेल एज द माइनस एम इफेक्ट बोथ. सो कंपेयरिंग ऑल दीज फोर कंपाउंड्स इट कैन बी सेड, हम ये कह सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए. It has to be the second and the fourth one that should be more acidic as compared to first and the third one. The reason being that it is showing the electron withdrawing influence because of the NO2 group in this particular case. अब बात ये आती है कि आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो किस बात पे डिपेंड करता है? It depend on the distance. So definitely NO2 group from the ortho position will be showing more electron withdrawing influence as compared to NO2 group which is present at the para position. Got it? But इस हिसाब से तो हमें ये लगता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. बट प्रैक्टिकली होता क्या है? इट इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल that is found to be less acidic compared to paranitrophenol. The reason given for this is intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding होने की वजह से we can say that जो deprotonation है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वो डिफिकल्ट हो जाएगा and the correct
order of the strength will be OH. NO2 at the para position will be said to be most acidic, followed by the ortho-nitrophenol, followed by the meta-nitrophenol, followed by phenol. Fine. So this is the answer for this particular question, where we have compared the acidic strength of the phenols in this case. You can be asked about the values of pKa comparison, Ka comparison, acidic strength का order, H plus ion की concentration का order. Anyway, the question can be asked in this case. In this case, there is second part that we are discussing when certain electron releasing groups are attached at the different position. Let's say the CH3 group, which is an plus I effect showing group, is attached at the ortho position, meta position, and at the para position, indicating like this. So if we do the comparison over here, CH3 group कौन सा effect show करता है? It shows the plus I effect, as we have indicated in this particular case, followed by the plus H effect indicated in this case, plus I and plus H effect indicated in this way, but there is only plus I effect indicated from the meta position. Therefore, maximum electron releasing effect will be there in which particular example? It is there in case of this compound, which is called as orthocresol. Therefore, this one should be the least acidic compound in this case. Therefore, phenol will be the most acidic compound among all these compounds, followed by the one where OH and CH3 group is present at the meta position, followed by OH and CH3 present at the para position, followed by OH and CH3 group present at the ortho position. OH और CH3 ग्रुप जब बॉन्डेड होता है, फिनोलिक जो मिथाइल फिनॉल्स होते हैं, they are also known by the names as cresols. So ortho, meta, para cresols and phenols are compared over here. The next comparison in case of phenol that can be asked over here is related to the phenol. If we attach the different groups, but now they are present at the similar positions, तो यहाँ पर भी हमें comparison करना है that which compound, which phenol is found to be more acidic in this particular case. तो पहली बात तो ये है कि जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट हो, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जो भी ग्रुप्स हैं उनको कैटेगराइज कर लें कि वो प्लस आई दे रहे हैं कि माइनस आई दे रहे हैं, वो प्लस एन दे रहे हैं कि माइनस एन दे रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो प्लस एच है कि माइनस एच है. सो इन दिस केस व्हाट कैन बी सेड ओवर हियर इज दैट इन दिस कंपैरिजन CH3 OCH3 NO2 group is there. OCH3 group is showing the plus I plus H effect. OCH3 group is showing minus I, and because of the lone pair is showing the plus M effect. NO2 group showing the minus I and the minus M effect. And in case of parachlorophenol, it is basically the minus I effect that is prevailing, because in case of halogen, inductive overcomes the mesomeric effect. Mesomeric effect is less effective because of the overlapping of 2p and 3p orbitals overlapping. इसीलिए क्लोरो ग्रुप is showing the minus I effect. सबसे ज़्यादा electron withdrawing influence will be there in case when NO2 group is there. So electron withdrawing group में NO2 आ गया और क्लोरोफिनॉल्स आ गए, parachlorophenol followed by phenol. In this case, after this, the least acidic compound in this particular list will be the one in which OCH3 group is attached. Why? Because OCH3 group is releasing electron density by virtue of
the plus n effect. तो ये OH है, ये CH3 ग्रुप है, and this is OH and this is OCH3 group that is present in this case. Is it clear? So this is the acidic strength order that we are having for the phenols in this particular case. I think this information will help you in understanding the concept and जब भी हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, so the next lecture discussion will be based on more acidic strength order, more basic strength order. So you can subscribe to channel to receive the updates when we are doing all these things, so that you won't be able to miss out all these things. Thank you.